Good evening, students. After long time, once again I am here due to the some problem. I was not uploading my videos. So, continuing with the periodic classification, in that I have explained periodic table, Mendeleev's periodic table as well as modern periodic table in the last lecture. So, I am going forward. So, as you know that in the modern periodic table there are 7 periods and 18 groups. In the groups classification 1 to 18, elements are classified into 4 blocks. So it is easy to study if you are knowing the electronic configuration which you have studied in the last chapter, because this table is very easy with the electronic configuration. That's mean this table can also study with the help of the electronic configuration. And as you know, there are 4 types of subshell: S subshell, P subshell, D subshell and F subshell. So elements of modern periodic table, or you can say all the elements of periodic table, can also be classified on the basis of the S block, P block, D block and F block. That's mean classification of element. Classification of elements. There are 4 types of blocks on the basis of configuration. That's mean 4 type of element. One is S block element. S block element. Number 2 is P block element. Number 3, D block elements. Number 4, F block element. On the basis of this, it is very easy to study of the properties, nature of any element. What is the meaning of S block element? As you know how to write the electronic configuration of any element. If you will write the electronic configuration, that's mean 1s2 2s2 2 basic like this. So what you will see that if the last electron, that's mean differentiating electron, enter in subshell, so that element will belongs from S block. S block element means last electron enter in S subshell. And as you know, in the S we can put 1 electron, that means we can write S1 or S2. So there are 2 groups in which S block elements belong. ऐसे 2 ग्रुप हैं पीरियडिक टेबल में जिनको मिला करके हम उनको S ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. S1 जिसमें लास्ट में S1 आएगा, कन्फिग्रेशन लिखें आप, और S1 आता है वो एक ग्रुप होगा, और जिसमें S2 आएगा वो सेकेंड ग्रुप होगा. S1 वाले ग्रुप को हम ग्रुप 1 बोलेंगे और S2 वाले को हम ग्रुप 2 बोलेंगे. दैट्स मीन group 1 and group 2 combinedly called S block element. In this group, that's mean S1, or you can say group 1, you will get hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, Fr. These are called group 1 element as well as S block element. These elements also called
alkali metal. Alkali metals. How you will justify these are the S1 group or group 1 elements? When you will write the electronic configuration of any one of these elements, so what you will get? At last you will get S1. Suppose I am writing the electronic configuration of sodium 11. So you have to write 1s1, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. See again, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. There are total 11 electrons, and you are seeing at last you are getting S1. This S indicate this is a group 1 element or S block element. If at last 1 is coming, S1, so group 1. If S2 will come, so it will be group 2 elements. One more example I am writing. See here, its atomic number is 11, so what will be it? It's 19 and it's 37. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. So जैसे मैंने 2 के लिखे हैं वैसे आपको सारे लिखने हैं, और जब आप सारे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1s1 लास्ट में. इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सो यू विल गेट 2s1. सोडियम में आप सामने देख रहे हैं 3s1 आ रहा है. इन पोटेशियम you will get 4s1. Rubidium you are seeing 5s1. In cesium 6s1, and in francium 7s1. In this way, it is clear that the S block elements are the elements of group 1 and group 2 combinedly. Okay. Now moving towards the group 2 elements. This is also a S block element, group 2. Differentiating electron enter in S subshell and has last subshell configuration S2. They have elements beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. So on writing the electronic configuration of these elements, what you will get? Be4, 1s2, 2s2. You are seeing 2s2. Now I am writing strontium 38. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. So जैसे आपने मैंने 2 लिखे हैं, आप देख रहे हैं कि लास्ट में 2 आ रहा है, S2, S2. So this is group 2 elements. So you have to write all these configuration. And students, now moving towards the properties of these elements, alkali metal as well as this group elements are called alkaline earth metal. Group 1 elements are called alkali metals. They are generally silvery white metal. They are not very hard. They have luster. Some metal of alkali group can be cut by knife. They are highly soluble. That's why they are called alkali metals. And they form salt when they react with highly electro elements like chlorine, fluorine, means halogens. Similarly, these group elements has valency +2. They are also metal and they have
more electronegativity than alkali metals. They are less metallic in comparison to the alkali metals. So in this way, S block elements is completed, and you must know there are two groups, group 1 and group 2 in the periodic table. They are also called S block element. Now moving towards the P block elements. As I have learned the definition of S block, P block means elements in which differentiating electrons enter in P subshell. That's mean last electron, that's mean last configuration should be P. और आप जानते हैं P में हम P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं. P1, P2, P3, P4, P5 and P6. This means अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P1 में जाता है, P1 होता है लास्ट कन्फिग्रेशन, सो वो भी P ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और P6 होता है तो भी P ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा. इनको ग्रुप से रिप्रेजेंट करने के लिए P1 ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 and 18. That's mean these 6 groups 13, 14, 15, 16, 17 and 18 are combinedly called P block element. Means इसके एलिमेंट्स सारे मिला करके P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. जनरली P ब्लॉक्स एलिमेंट को नॉन मेटल कहा जाता है, लेकिन इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स नहीं होते हैं. इसमें कुछ एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं. ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो हैं वो नोबल गैस कैटेगरी में जाते हैं, और कुछ एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें हम मेटलॉइड बोलते हैं. और ग्रुप 13 में नीचे के साइड में कुछ एलिमेंट मेटल हैं, 14 में भी थोड़े हैं मेटल और 15 में भी हैं. दैट्स मीन P ब्लॉक कहने के लिए तो नॉन मेटल का ग्रुप है, लेकिन इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस 4 टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं. हम इसके 2 एलिमेंट्स लिखते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम. नाउ कार्बन, सिलिकॉन. नाउ this nitrogen, phosphorus. Now you are seeing here oxygen, sulfur, and this is fluorine, chlorine, and here neon, इसके ऊपर हीलियम होता है, आर्गन. सो अगर हम इनमें से किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखेंगे, बोरान, एल्युमिनियम, सो व्हाट यू विल गेट लास्ट में P1 आएगा. सपोज हम बोरान का कन्फिग्रेशन लिखते हैं, बोरान 5, 1s2, 2s2, 2p1. और अगर हम इसमें से किसी का लिखते हैं ग्रुप 15 या P3 लिखा है, फास्फोरस का कन्फिग्रेशन लिखते हैं, फास्फोरस 15, सो यू विल गेट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में जाता है, दैट्स मीन दैट इफ़ द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन P सबशेल एंड गेट द कन्फिग्रेशन P1 to P6. अगर आप P1 से P6 कोई भी पाते हैं, उसे हम P ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द D ब्लॉक एलिमेंट्स. D block elements.
When you will see the periodic table, you will see some elements between S block and P block. S block elements, that's mean extreme left side of the periodic table. Left side में जो है वो S block बोला जाएगा. And P block elements extreme right side. S block और P block के बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं. 10 एलिमेंट्स के जो सीरीज़ है, 10 ग्रुप्स जो बचते हैं, उनको हम D ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. ये थोड़ा सा अंदर की तरफ हैं पीरियडिक टेबल में. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड में ये नहीं पाए जाते हैं. और ये आपकी 4 लाइंस हैं इस तरह से, 1 2 3 4. और इस तरह से 10 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट हैं और आपके इस साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं. When you will write the electronic configuration of any element and you are getting differentiating electrons enter in D subshell and you are getting the configuration D1 to 10, so this will be the D block element. There are 10 groups in this. Group 3 to group 12, they are called D block elements, and in each group you will get the 4 elements, 1 2 3 4, 1 2 3 4. For your information, elements study, we study like top to bottom according to the group. In S block, top to bottom we will see. In P block also we will see top to bottom. They will have the similar properties, but if we study D block elements, so you have to study 10 groups. So D block के elements को हम top to bottom group method से नहीं पढ़ते हैं, उनको हम left to right पढ़ते हैं. और left to right में हम इनको सीरीज़ बोलते हैं. ये 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़. ये 10 एलिमेंट्स जो हैं, जिसमें हम आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, copper and zinc. These are called 3D series elements, because if you will write the configuration of any element of this, so you will get at last 3D, 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10, 3D10. 3D4 and 3D9 we will not write. That's mean from 21 to 30, this is the first series, atomic number 21 to atomic number 30, and second series is atomic number 39 to atomic number 48, and then 57, then 72, hafnium 72 to mercury 80. Similarly 89 and 104 to 112. Bium. So these are the 40 elements which belong to D block elements, and first series is called 3D series, or you can say first to transition series. Second series, that is 4D series, it will be called second transition series.
third transition series are 5D series, and fourth transition series or 6D series. So dear student, it is sufficient, and according to this configuration, now you have to define the F block element, and I'm giving you hints for that. The F block elements are 2 lines below the table, that will be called F block element. Okay, good night.